Can we have a short film on Vibrant Gujarat now? Papa, what are you planting here, Papa? Your bright future. "20 years ago, just like this, Prime Minister Narendra Modi, the then Chief Minister of Gujarat, planted a seed of a vision in the soil of Gujarat. There were challenges and obstacles, countless hurdles and innumerable constraints. Undaunted and undeterred, he thought big. His visionary leadership surmounted them all. He looked beyond the horizons. He looked ahead of the times. He looked into the future, responding to challenges, overcoming adversity, and enthusiastically exploring newer opportunities. 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था। आज वो इतना विशाल और बृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। Vibrant Gujarat Global Summit. One man leading from the front. One idea reigning supreme. 20 years bringing about an impactful transformation. 100,000 MOUs signed. Nearly 75,000 commissioned or at various stages of completion. $55 billion in foreign direct investments. With perseverance and conviction, Shri Narendra Modi conceptualized Vibrant Gujarat, a visionary initiative that has blossomed into a premier global platform for business networking, knowledge sharing, and strategic partnerships. Today, the Vibrant Gujarat Global Summit is a global event of bonding. One idea, a reality translated on the ground. India's first international financial services center, Gift City, now operational. World's largest diamond hub, strengthening global supply chains. World's tallest statue, dedicated to the people. India's first petroleum chemicals and petrochemical investment region, championing circular economic policies. India's first greenfield smart city, setting the benchmark for sustainable development. India's largest hybrid energy park, pioneering renewable energy. Highest exports from India achieved. Ease of doing business, boosting entrepreneurship and innovation. Ease of living, enhancing quality of life. Millions of employment opportunities across sectors through its business-friendly policies. State-of-the-art infrastructure, facilitating next-generation urban planning. Where do you find testimony of all these? On the faces of bright young children, confident, skilled youth, relaxed elders, happy and healthy families, inclusive society, empowered women, flourishing investors, and world leaders. Gujarat stands out different and perhaps better than anywhere else in the country. One would be considered stupid in not investing in Gujarat. One thinks of Gujarat, what comes to mind are its confidence, vitality, innovation, vision, progressiveness, and of course, its can-do attitude. Reliance's engagement in Gujarat is a partnership to celebrate the spirit of this great state, the spirit to trigger 1 billion Indian dreams, and I salute that spirit. If we work together, I am convinced that the world's oldest democracy and the world's largest democracy can end extreme poverty in our lifetime. We are grateful for the input, for the business and the science and the innovation that the people of India have brought to our nation. The last 20 years were but a prologue. Gujarat has performed, reformed, and transformed. And it's all set to perform again.
it's all set to scale loftier aspirational heights. The world awaits with a bated breath. For when Gujarat dreams, India envisions. And when India acts, the world marvels. Under the able guidance of Chief Minister Bhupendra Bhai Patel, with the first vibrant summit during Amrit Kal in the offing, Gujarat is all fully geared up to play a proactive role in realizing Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat at 2047. At Vibrant Gujarat Global Summit 2024, witness Gujarat's onward march into the future with unbridled enthusiasm, unflagging zeal, unwavering confidence, and unsurpassed optimism. From smart manufacturing to smart businesses, Gujarat spearheads the fourth industrial revolution with Industry 4.0. The state also aims to drive innovation by leveraging space technology, artificial intelligence, machine learning, blockchain, and the Internet of Things across sectors to build smart, connected infrastructure. With its thriving primary sector, robust manufacturing sector, and its burgeoning tertiary sector, the state of Gujarat is all set to contribute nearly 10% to India's journey towards a $5 trillion economy, which will enable the country to become the world's third largest economy in the next few years, empowering MSMEs and women entrepreneurs, creating youth-centric skill development ecosystem. Gujarat spearheads India's Techade as a lighthouse for startups and e-commerce. From textiles, bulk drugs, medical devices, ceramics and biotech, Gujarat aims to facilitate sector-specific plug-and-play parks. Driving inclusive growth, the state is going to be a game changer in semiconductors and electronics manufacturing, blazing trails in sustainability and net zero emissions, unlocking the circular economy's potential, catalyzing India's green hydrogen mission, and aspiring to become an electric vehicle and green energy hub with investments in battery and pumped storage solutions, along with iconic projects in aerospace and defense. Gujarat is well on its way to becoming future ready. આજે ગ્લોબલ ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીઓમાંથી અનેક કંપનીઓ ગુજરાતમાં પોતાના કારોબાર શરૂ કર્યા છે. આ બધું વાઇબ્રન્ટ સમિટની સફળતાને કારણે જ શક્ય બન્યું છે. Catalyzing exponential growth and human progress, the Vibrant Gujarat Global Summit has created an ecosystem for development. With gross state domestic product growing significantly between 2002-03 and 2022-23, outpacing national averages. ये रुकने का समय नहीं है. पिछले 20 वर्षों से अगले 20 वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है. यही समय है जब भारत को एक ऐसा रोड मैप बनाना होगा जो उसे 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हम उसको दुनिया के सामने प्रस्थापित करें. Come, be a part of the Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Gateway to Future. चाहे वो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू हो या बिगेस्ट स्टेडियम या इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी या इंडियाज लार्जेस्ट हाइब्रिड एनर्जी पार्क, Gujarat has it all.
और कितनी खूबसूरत बात है कि 2003 इतने साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात रहे, उन्होंने ये सपना देखा, ये एक थॉट उनके दिमाग में आया, उन्होंने ये कंसेप्चुअलाइज किया, and it became such a big model that most of the states are adapting this. जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए. माननीय चीफ मिनिस्टर गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल is looking forward 2024 का ये जो समिट होने वाला है. I now request Shri Rajkumar Beniwal ji, IAS, to please come forward for the presentation of Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Shri Rajkumar Beniwal ji, IAS. Vice Chairman and CEO Gujarat Maritime Board, Government of Gujarat. जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री राजकुमार बेनीवाल जी का. Good morning, everyone. Dignitaries on the dais, Honorable Minister of Agriculture, Animal Husbandry, Cow Breeding, Fisheries, Rural Housing, Rural Development, Government of Gujarat, Shri Raghavji Patel, Shri Randhir Vikram Singh, Chairman FICCI, Rajasthan State, Council and Chairman and Managing Director, Mandava Hotels, Shri P.V. Pandya, my colleague from Higher Education, Shri H.M. Jadeja, Joint MD, Tourism Corporation, Government of Gujarat, and the leaders of the industry of Rajasthan. First of all, I welcome you all in today's road show of Vibrant Gujarat conducted by Government of Gujarat. As you have seen in the movie, and all of you know that what Gujarat is, I think I don't need to give any more presentations, lectures or movies to show what Gujarat is. But today we are here to discuss some of the important things which are beneficial to both in the sense Rajasthan and Gujarat. We want to showcase our journey, a long journey by which we have reached at the stage where we are today, and the way forward in which both the states, not only both the states but many other states of the country can be part and can be part in the success. So, how this summit will be useful to all of you, to all of us, that I'll discuss a little later. But I have a very small presentation what Gujarat is, just to highlight some of the things. As you know, that Vibrant Gujarat journey started in 2003 at the time when Gujarat was passing through a difficult phase. There was very severe earthquake in Kutch. The industry was shaken. There was lack of confidence. To bring confidence among industrialists, to bring investment, to help people, this summit was started in 2003 by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the then Chief Minister of Gujarat. And this event has really helped Gujarat to stand up the way we are today. And we now very rightly can claim that we are on a journey in which we will lead the entire country to Viksit Bharat, or maybe a developed country.
Here we are showing some of the important parameters where Gujarat stands. You know, Gujarat, 6% of India's geographical area and only 5% of India's population. Gujarat is today contributing to more than 8.3% of the country's GDP. Cumulative FDI of almost $55 billion from 2000 to 2022. Major contribution because of the summit. 18% of India's industrial output, 11% of the factories, 37% share in manufacturing sector, 33% share in India's total exports, more than 1.3 million MSMEs. That shows the entire ecosystem what Gujarat is contributing for the country. And the main reason and the pioneering things, we are the top achievers in terms of ease of doing business, top achievers in terms of national startup ranking, top achievers in logistics, each across different states index, top performer in Niti Aayog's State Energy and Climate Index, and first rank in Good Governance Index 2021. Now, how and why one should invest in Gujarat? There are enabling regions and criteria. We have one of the best infrastructure in terms of road, railways, power, water, everything. Ease of doing business, you have just seen that we are among top states. We are sectoral leaders in terms of like gems and jewelry, pharmaceuticals, now even automobiles and many other. We are policy-driven state. So policy-driven means whenever there is any new upcoming sector or the existing sector, we have policies for that, and we revise our policies every 3 year, 4 year, or 5 year. Now, how this policy thing helps industries? It brings certainty among the industrialists. It's not anything is not on discretion of one person or the other. It is what written in the policy. Then skilled manpower, workforce, this is one of the important factor for any industrial investment. We are very hardly working on that. Focus on sustainability. While attracting the industries, we cannot forget our responsibility towards sustainability, environment. And we are very concerned, and I will show you how we are focusing on sustainability. And then ease of living. Ultimately, everything brings to ease of living or the quality of life of the people of the state. If we bring industry and if the quality of life is not good, then there is no use of bringing the industry. So the quality of life is also our important consideration for any investment. Now I'll explain a little bit on each of these parameters which have enabled the industrial growth of Gujarat. First is infrastructure. You can see that Gujarat is power surplus state. Whatever power demand requirement is there, we cater to that, as well as we export power to other states. We have a very good gas and water grid, more than 2,700 kilometer operational gas grid and statewide water grid from Narmada Canal. There was a time, let me tell you, there was a time when in Gujarat we used to run trains to supply water to water areas like Saurashtra and Kutch. And today you will see that each and every household in Gujarat is having tap water, safe tap water. It is possible only and only because of visionary decisions and projects like Narmada Water. We have very well established industrial infrastructure like plug and play sector specific parks, PM Mitra textile parks, bulk drug parks, then PCPIR for chemical sector, MBSIR. These are all investment regions for different sectors. Dholera SIR. These special investment regions, they help the industry in terms of reducing the cost of establishing industry, because each industry require a specific kind of basic inputs. For example, a textile industry require
very well established gas grid. Maybe a chemical industry require a very good port because they have to import the crude oil. Maybe the gas industry require ports. So all those things have been taken care of in these special investment regions. Very well road connectivity. Now this rail and road connectivity is another very important factor for industrial investment and development. Let me tell you that Gujarat has taken advantage of the Bombay-Delhi industrial corridor which is coming up. Almost 36% of the Delhi-Mumbai industrial corridor pass through Gujarat, and we are connecting all our special investment regions, our ports, our important greenfield cities with this main corridor, because this connects us with two important cities of the country, Bombay and Delhi, and that this corridor passes through Rajasthan also. We have very good port connectivity. For any industrial development, port is a very important sector. Let me tell you, Gujarat accounts for more than 40% of the entire maritime sector of the country. 40% of the export and imports are taking place from Gujarat ports. And Gujarat has developed, India's some of the best and biggest ports in the country. Then rail connectivity, I have just explained you, and air connectivity, this is again very important to save time. Even our tier 2, tier 3 cities have airports and good airport connectivity. You can go to Rajkot, you can go to Gandhidham, you can go to Bhuj, you can go to Junagadh. You will get the flights from Ahmedabad, from even Bombay, from Delhi. So very good air connectivity. These are some of the future ready infrastructure where industries can directly plug and play, start their industries. I told you Delhi-Mumbai Industrial Corridor. It's a 90 billion dedicated freight corridor between Delhi and Mumbai. We are taking advantage of that. Gift City, I have another slide. I'll explain why this is important. Dholera SIR, again, Greenfield City, where people can come and start their business. This is, let me tell you, the entire area of Dholera is almost equal to Singapore. So we can develop a new Singapore at this place. That is the kind of greenfield city that we are planning. Dream City, another in Surat. Diamond Research, it is to boost the diamond industry. High-speed rail connectivity. Mandal Bechraji region, another very important special economic region for automobile industries. There was a time when there was not a single car being produced in Gujarat 15 years back. And today, we are, one of the biggest exporter of cars from Gujarat, which are manufactured within Gujarat. That has been possible only because of, visionary decisions. Gift City is one of its own kind, very unique concept. Gift City is India's first IFSC, International Financial Services Center. In the world, there are only 3 or 4 places where this kind of facility is available. One is Dubai, one is Hong Kong, one is UK, and then here in India at Gift City. Now, why this is important? That for any business, you need funds, you need finance. Now, for finance, this is the place where you come. And once if you come to, visit Vibrant Gujarat or any other time, you go and see this place, that how well developed this place has really come up. Now, for any industrial development, we need a very good ecosystem of finance, infrastructure, policies, and the industrialists. Then only the things can grow. So, this was the thing that was lacking somewhere in Gujarat. And it was again a vision of our Honorable Prime Minister almost 10 years back, that we will require, if we have to become Viksit Bharat, we will require this kind of services. And today, you will see that this is our country's one of the best financial centers. Now, there are bullion exchanges, there are international exchanges, banking. You name the bank in the world, you will find their headquarters here. You name the biggest, fintech concept, you will find it in Gift City. Then there are aircraft leasing, there are ship leasing, there are ancillary services,
foreign universities related to financial sectors. All those entire ecosystem has come up at GIFT City. So you know that our country's financial center right now, financial hub right now is Bombay. Now this is going to be the, subsidiary or maybe the next biggest center in the country. And second important thing, that we are connecting Bombay with this city by high-speed train. So you can see the connectivity plays a very, very important role for any development. So that is kind of vision with which we are going ahead. Then we have proactive government committed to ease of doing business. For any industry, ease of doing is most important, because these permissions, these licenses, various regulations, they are biggest irritation for any industry. If any industrialist want to invest in your state, then he would like that whenever he takes a decision, the permissions are given without any problem, any hindrances. If any delay is taking place, it causes problem to the business. So that's why our government is very conscious of it and continuously putting effort to reduce the time of various permissions for any industry. In terms of various licenses or maybe various regulations, etc. We are also revising our rules and regulations, how freely and how easily these permissions can be given to industrialists. We have, of course, nowadays in every state has online portals for all kind of permissions, but just by having online portal doesn't mean that you'll get the permissions on time. There are various loopholes also. So in Gujarat, we are continuously trying to plug those loopholes and trying to give all these permissions on time. Then next is Gujarat's sectoral leadership. Wherever we are leader, we are focusing how we can further grow it. For example, our ceramic production, for example, diamond production, for example, automobile and auto components, chemical and petrochemicals. So these are the sectors in which where we are already leader. We are trying to achieve more, but we are also trying to bring new sectors. We are trying to become leader in new sectors also, so that our economy can grow faster. Then there are opportunities in some of the iconic sectors where we are trying to become leader. I have explained them here. One is green hydrogen, which is the future for energy. The entire European world is now banking on hydrogen, green hydrogen. Now they will stop in 2030, they will stop using hydrocarbons. They have to switch to green hydrogen, and they themselves do not have that much of capacity to produce green hydrogen. So now we in Gujarat are planning in a big way to produce green hydrogen, to transport green hydrogen to European countries. So we are developing our ports in such a way that whatever green hydrogen is produced, it can be transported easily to European countries, because this is the first mover advantage that we want to take. The cost of green hydrogen in Europe and in India will be there is a huge difference in that, and that is what the advantage we want to take. For that, we have to develop our infrastructure right now. For 2030, we start now. Similarly, semiconductor. This is a new sector for the country. Lot of semicon industries are shifting their base from other countries to our country. So we have come up with a policy also, and we are trying that we become leader in semicon sector. We are discussing with big players, we are facilitating them, and we are bringing them to Gujarat. We are also working on what kind of labor force will be required, what kind of educational institutions will be required. That also we are trying to work on. Now, policy-driven state. As I told you, that policy is a very important thing for any industrial investment. The industrialist will come and see whether you have a policy for something or not, because this gives certainty to the business. So you can see we have all these policies: renewable energy policy, Atmanirbhar Gujarat scheme, Gujarat semicon policy, electronics policy, ITES policy, biotech policy, startup policy, sports policy, ceramics, cinematic tourism policy, waste to energy policy. All those policies are there,
And you can see all these policies have been revised. There's no policy which is old. Every 2 year, 3 year before Vibrant Gujarat, we review and revise our policies based on present condition of the industry. Then we have this scheme I have highlighted here, which is important for MSMEs in small scale industries. We are giving different kind of capital subsidies, interest subsidies, capital input tax credits, and all those whatever is required is there. This is the one scheme which we are focusing now for medium and small scale industry promotion. Then we are supporting micro and small and medium enterprises. Now why this is important? Micro, medium and small scale enterprise are important from the point of view, one is export and second is supporting the main industry. If you have this ecosystem, this will ultimately reduce the cost of production. So we need to, and these are the industries which bring the maximum innovation also. So we need to support them because they are the most vulnerable sector in as far as the industry is concerned. Whether it is say COVID or maybe other calamity, this is the sector which is the most affected and worst affected. So government need to take care of them because they are also one of the biggest employment providers. So we have our separate policies, we have our separate vision how to help them. Then to build knowledge-based society, this is another important thing which is important for industrial investment. Whenever we talk with a big industrialist, whether it is semicon or maybe other automobile and everything, first thing they ask, two things they ask. First is whether we have the land available. Land is the first thing which they ask. Second thing they ask is this knowledge-based society, whether right knowledge, manpower is available or not, because that is one of the biggest costs for any industry. So we are focusing on our educational system in such a way that it caters to the upcoming industrial needs. For example, we have some of the best institutes, Indian Institute of Management Ahmedabad, IIT Gandhinagar, National Institute of Design, National Institute of Fashion Technology, Forensic Science University, Maritime University, National Law University, Raksha Shakti University, SAPT University. There are many educational institutions which are some of the best in the country and abroad also. And we are also focusing on the institutions which will cater to the need of the upcoming industries in the state. So we have to create an ecosystem, then only industries will come. Then we have transition towards sustainability. Whatever industrial growth is taking place, until unless it is sustainable, we cannot say us as Viksit Bharat. And we are very concerned also, and we are putting our efforts also. You can see here that our renewable energy installed capacity right now is 22 gigawatt. And in our planning is more than 50 gigawatt in the upcoming 5 to 10 years. So we'll be doubling our renewable energy capacity in 5 to 10 years. That is our commitment. We have already started working on that, whether it is green hydrogen policy or it is wind energy policy or it is solar energy policy. Our aim is that we have to come out of this hydrocarbon thing and we have to 100% switch to renewable energy. In fact, even for our cities also, we have a plan in which we will switch within next 3 years. Our target is in next 3 years, each and every urban local body will be using only and only renewable energy. No electricity generated by coal or anything will be used by our urban local bodies. We are building big solar plants, wind plants, which will cater to the demand of these urban local bodies, corporations, municipalities, everywhere. There is a big way ahead in which we are trying to focus on this renewable energy, which is our commitment for our sustainability. Now, ease of living, this is the most important thing. At the end of everything comes to ease of living. If people are happy, then everything is good. If people are not happy, then any industrial investment or anything is not good. So we are focusing on our cities. Gujarat is the most urbanized state as of now, one of the most. 49, now it is more than 50% of our population lives in our cities.
And we are constantly working how we can improve the quality of life in our cities, how we can make our cities livable, smart cities, clean cities, extensive and well-connected public transport systems, healthcare, sports infrastructure, vibrant and safe states, and recreational facility. Each and every aspect, we have policies, we are focusing, we have funds, we have budgetary allocations, we have systems, how we can, kind of improve this. Yes, now this is important. Excuse me. This is important because we are doing a lot of these things. The idea behind this is how we can become a Viksit Bharat and how we can contribute to Viksit Bharat, how we can become a developed nation. Any thought, any idea? Simply केवल सोचने से तो नहीं हो जाएगा कि हम developed country बन जाएंगे. That's not possible. We have to have a plan for that. We have to have a vision for that. You see Dubai. Dubai was, 20 years, 30 years back, Dubai was nothing. Now Dubai is one of the best place in the world. Why? एक ही रीजन है उसका कि दुबई में जो भी वो करते हैं that is best in the world. You will find वहाँ के मॉल भी होंगे, they will be best in the world. वहाँ का एयरपोर्ट भी होगा, that will be best in the world. वहाँ के होटल्स होंगे, they will be best in the world. So if you have to become best in the world, you have to do best in the world. And that is what our vision is in Gujarat. अब हम जो भी कर रहे हैं, we are trying that it is best in the world. Then only we can say that we are the developed country, or we are the leader, or we are the best in the entire world. And उसी के बेस पे हमने ये सब शुरुआत किया है. Vibrant Gujarat हो या whether it is Vibrant Gujarat or it is new infrastructure upcoming, you can see Statue of Unity, world's tallest statue. You can see Narendra Modi Stadium, world's biggest stadium. So there are many such best things which are coming up in Gujarat, which are the some of the best in the world and country also. Our policies also, we are aligning with best in the world, whether it is Japan, Korea, Singapore, like IFSC. I gave you the example, Gift City, one of the best in the world. There are only 3 or 4 IFSC in the world, and our IFSC, we can proudly say, is one of the best, because we are providing the best technology, best talent, and best infrastructure there. So, and to create this entire ecosystem, we have this Vibrant Gujarat Summit, in which leaders, industrialists, politicians, media people, everybody, they come, they discuss, they decide, they collaborate that what is the future, how we should align our policies. Now, why it is important for you as a whole? Because this summit, you find thousands and thousands of people coming across the world. This summit is not to attract MOUs or the investment at that particular point of time. No, nobody will come and decide during BG that I am investing so much. No, they come and they see that what is happening here. Then only they develop their mindset that yes, this is a place where things are happening. So many people, my request to you is you can take advantage of this. Now what is there for you in this Vibrant Gujarat Summit? Rajasthan is closest to Gujarat. Rajasthan can take advantage of whatever development are taking place in Gujarat, because this is the nearest state. Because of the proximity, whatever say, if there is a surplus power, it can go first to Rajasthan. If there is best road connectivity, it will help Rajasthan. If there is port connectivity, we are developing ports, it will help Rajasthan to get exporter imports. Like for example, let me tell you, our best hospitals in Gujarat, Rajasthan is using them. Most of the people from South Rajasthan are coming there. Similarly, Gujaratis are using the many facilities of Rajasthan. Whether it is Mount Abu or it is Udaipur or it is Jodhpur or Jaisalmer, during vacations, and entire Gujarat is in Rajasthan. For industrial thing, Rajasthan is in Gujarat. For medical thing, Rajasthan is in Gujarat. We are kind of sister states. We can take advantage of each other's strengths. So this is a big opportunity. And let me tell you that whatever Gujarat has, Rajasthan has more than that. In terms of natural resources, in terms of proximity to bigger cities like Delhi,
in terms of, connectivity. So why can't, Rajasthan, compete with Gujarat? Let me give you a challenge actually. So you take this challenge and take up, have a plan for, Biksit Rajasthan for coming future. And we are there to help you. We are there to. So each other, we are complementary to each other. One of this thing is shown here. That's what I put this slide, that Rajasthan is very strong in tourism. Lot of foreigners comes. We have a circuit. People come to Jaipur, they come to Jaisalmer, they come to Udaipur. Now we have plans that Gujarat has come up with lot of places as far as tourist destinations are concerned. For example, Rann of Kutch, one of the most famous place. For example, Gir Somnath, Somnath Temple, Gir for lion, Statue of Unity, then there are beaches, Dwarka, everything. So if a foreigner is coming all the way from US, UK and other place up to Udaipur, how much time it will take for him to take to, say, Statue of Unity, say, up to Gir, say, Rann of Kutch. So if we collaborate with you, we can take advantage of that. And that's what we have plans. We also have meetings with some of the, this tourist people today, that how we can extend this. So we want to take advantage of your strength. You take advantage of our strength. These are some of the tourist destination places which we have identified, how we can extend your circuit. There is a triangle, Delhi, Agra, Jaipur, or maybe it's a triangle. Now we want to make it a quadrilateral. Delhi, Agra, Jaipur, and maybe Statue of Unity, or maybe Rann of Kutch. We can make it. So that kind of things we are planning in tourism sector, taking your help. Now this Rann of Kutch has been awarded recently by UNWTO as the best tourism village in the world. You see. So we have shown it here that how we can take advantage to bring the foreign tourist or even the national tourist which is coming to Gujarat, to Rajasthan, how can we bring them to Gujarat? This is a brief about the event which is taking place in 24 January, 10th, 11th and 12th. It's a 3-day event. You are most welcome there with your colleagues, with your other industry partners. This is the journey which I have shown here, how we started from 2003 to 2024. These are some of the highlights of the event. For example, curtain raiser event, national international road shows. We have gone to more than 20 countries. We have gone to more than 20 cities in the country to promote this event. And a part of that, today we are here in Jaipur. We have pre-summit seminars in which we decide how our main seminars should be, how should we plan them. Inaugural ceremony, Honorable Prime Minister will be there. Country and state seminars. You can hold your state seminar during Vibrant Gujarat and take advantage. You can showcase Rajasthan because a lot of people are gathering at one place. We should take advantage of that. We can have B2B and B2G meetings. We have global trade show also. You can showcase, if you want to showcase, culture or maybe tourism sites, everything in our trade show. These are the, detailed events. On 9th January, there is a Tech It and Champion Service Sector seminar. Main event starts from 10th of January. Some of the events written 11th January, 12th January. Then these are global trade show, what we are highlighting there. We are highlighting all the sectors: semiconductor, e-mobility, green hydrogen, emerging technology, industry 4.0, AI, machine learning, blockchain, big data analysis, space technology, augmented reality, defense, biotech, smart infra, fintech, health, education, every sector. They'll be showcasing what is happening in the world, and best of the world will be showcased there. So with this, I invite you all to Vibrant Gujarat. I will close my speech with what Vibrant Gujarat looks like. I have a very, very small film of 4 minutes of previous Vibrant Gujarat. I think some of you, any one of you who has attended earlier? Yes, one. So some of you have already, 2 or 3 have attended. They know what is the level and what kind of event this is. But I have some highlights that will give you an idea the kind of event that this event is. And we are really proud that this is one of the best MICE event in the world. Thank you so much.
We explored possibilities, created opportunities, and it was all because we came together for a purpose. Gujarat, the land of Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel, also represents the business spirit of India. Gujarat has succeeded and will continue to grow not only because of our initiatives, but because you all have made Gujarat a part of your growth story. Innovation in India always takes off from this great state of Gujarat. Two years ago, if somebody would have stood up on this stage and talked to you about a digital India, a Make in India, a Skills India, a Startup India, smart cities, smart states, you would have looked at them and said, what are you talking about? And yet today, it almost rolls off the tongue of each of us speakers. That's what leadership is about. Here again, at the most investment-friendly state of India, 8th consecutive time at the same prestigious global platform. Wonderful. It's very vibrant. Lots of business, lots of discussions, and lots to follow up on. There's a lot of opportunity, and I think a lot of international companies are willing to do that. Here again, at Vibrant Gujarat Global Summit 2017. Let us continue the tradition of growth, partnerships, and innovations. Let us strengthen the bonds of friendship and collaboration. It's tremendous. This is the third Vibrant Gujarat in a row that we've been a country partner of people, and we're very glad and very proud to continue that very close relationship. It's been fabulous. The people have been so friendly. The conference is so well organized. The speeches last night and the Prime Minister was fabulous. Keep doing what you're doing. Fabulous job. Once again, I welcome you all and invite you to be part of India of today and India of tomorrow. See you soon in the year 2019, and let's make great things happen all over again. Much Shri Rajkumar Beniwal Ji, IAS, Vice Chairman and CEO, Gujarat Maritime Board, Government of Gujarat. As Sir rightly said, that to be the best in the world, you have to deliver the best in the world. And that can be delivered only when you can offer the proficiency and compassion to the people who are coming for investment and can get good returns. And this is what Gujarat has. Smiling youth, happy elders, happy and healthy families, empowered women. What else do you need? These are the signs of a place which is fully flourished and is offering the best of it to the world. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राजस्थान से कई सारे इन्वेस्टर्स, बिजनेस हाउसेस ऐसे हैं जिन्होंने गुजरात में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है एंड दे हैव बीन रियली हैप्पी विद द रिटर्न्स विच दे हैव गॉट फ्रॉम देयर. उनके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं. दे वुड लाइक टू शेयर इट हियर टुडे. मे आई रिक्वेस्ट Mr. Kiran Patil, Managing Director, Wonder Cement Limited, to please come up on the stage and share his experience. Can we hear it for him?
Mr. Kiran Patil, Managing Director, Wonder Cement. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable Minister for Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries, Rural Housing, Rural Development of Government of Gujarat, all senior officials of Gujarat State Government on the dais, and ladies and gentlemen and my friends. First of all, I would like to convey my sincere thanks to the state of Gujarat and the organizing committee for giving this opportunity to speak about our experience in Gujarat state while setting up a greenfield grinding unit near Baroda. I am fully agree and endorse the views given by Rajkumar ji about the Gujarat state, the Gujarat policies, ease of doing business, cooperation, coordination, everything we really experienced there. First of all, my heartfelt thanks to the state of Gujarat. Wonder Cement, I hope you are all aware, you must be seeing the advertisement in the television. We are part of RK Marble Group, who are one of the best marble producers and seller in the country and also outside the country. The visionary of our chairman, Sri Ashok Patni ji, decided to set up the cement plant somewhere in 2011 and 12 in Rajasthan. And the first plant was set up and commissioned in 2013-14 in Rajasthan, near Chittorgarh district. By seeing the success of that plant, we put up the second plant in the same location with two grinding units, split grinding units, one in Maharashtra, that is Dhule, and second one was in Madhya Pradesh in Badnavar. When we put up the third clinkerization plant, then we went to Haryana for setting the split grinding unit. In 2021-22, we were in the board meeting. We are planning to set up the fourth plant in the same location, along with the grinding units. One unit was almost finalized in Uttar Pradesh, Aligarh. While we were deciding, we were in dilemma whether to go to Gujarat or to go to some other state. By that time, the vibrant Gujarat policy was available with us. We had very good experience from the industrialist by setting the plants in Gujarat, which is eco-friendly, user-friendly. We get everything what we want. And the state was really going in a very, very faster pace, not only in individual home building sectors, but also in infrastructure. That was the most attracting point for us in the board meeting, and we immediately took a call to set up a greenfield grinding unit near Baroda. The place is called Tulsigram. As usual, when we started the land acquisition, we thought it is going to take at least a year or so. But you can't believe within 2 months the land was acquired without any hassles. The required permissions for setting the plant, environmental clearances,
consent to establish, including the power connectivity, which was a tough target that time because there were some obstacles to get the power, but the state government, especially GETCO, helped us to give the power in right time before commissioning the plant. For any grinding unit, split grinding unit, when you are thinking to set up, normally we see from where do we get cementitious material? Cementitious material means waste which generate from the industry like fly ash, slag from steel plant. The Vanakbori power plant was very close to us to get the fly ash. The railway connectivity was again an important issue to minimize the logistic cost. The central government and also the Baroda Railway Division helped a lot to get the 5.5 kilometer rail connectivity up to the plant. It was an impossible task for us to get the help from government to set up 5.5 kilometer railway line up to the plant. Today in this particular era, to get a piece of land is difficult. That kind of support we got it. The work started somewhere in December 2022. The plant was commissioned. The first bag was taken in record time, less than 10 months. That was on 30th September 2023. Definitely the credit goes to my team, my management, but I will not forget to tell that without the support of Gujarat government, it was very, very difficult to commission the plant by 30th of September. Again, our heartfelt thanks and compliments to everyone in the state government who really helped us. We have almost about 500 to 550 crore rupees investment in that particular plant. The plant is in operation. The cement bags are going in the market. I don't know what kind of challenge I am going to get after starting the plant. Before starting the plant, normally the expectation is from the government. We go and talk to them. We need this permission. We need that kind of grant. We need that kind of policy. And normally, state government, they help us. After starting the plant, the real issues come from industrial relations. I am sure the state government will continue to help to operate the plant in a peacer way, more safer way. Because for any industry, safety is important. Without safe operation, it is difficult to sustain the business. On behalf of Wonder Cement, I would like to commit to the state government that whatever we operate it, in whichever we operate, we will never ever pollute the environment. That is our policy. People who are in the factory, people who are around the factory, maybe in the villages surrounding the plant, there will not be a gram of dust will be going to that plant. There will be zero discharge from the plant. And safety is on top, most priority, there will not be any injury. I think these are the expectations normally government looks from an industrial. We are committed for that one. Today that place has become a hub for employability, and we are taking local people. As per the policy and also as per the need, skill is important to run the factory. If skill is available, there is no need for us to go outside the state. Let me tell you proudly, the white collar job people, the blue collar job people are from local. Our unit head is also from Gujarat. We have not got any unit head from outside this state. So that is our commitment, sir. And we will see that in coming days, with the close cooperation and coordination by industries like us, with government, we'll have many more milestones, many more achievements
which are going to be feather on our caps. Thank you very much once again for giving this opportunity to share our views. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Kiran Patil, Managing Director, Wonder Cement Limited. May I now request Mr. Shashwat Kulshresht, State Coordinator, KN Oil and Gas, to please come and share the experience he had with Gujarat, vibrant Gujarat. Can we hear it for him, please? Good morning to all, Honorable Minister Saab and dignitaries on dais and my fellow friends. Firstly, many thanks giving me an opportunity to speak from this platform, a esteemed platform. As I recall the way Rajkumar ji has started, Beniwal Saab, that there is a lot of synergy we see between these two states, the Rajasthan and the Gujarat. I have an very interesting case study to share, which will actually establish that how beautiful synergies we have between these two states. So the story started somewhere in 2004, while we discovered huge reserves of oil and gas in Barmer. There were a potential to produce almost 2 lakh barrels of crude oil and 4 MMSCM of gas. But the challenge was ahead to us where to take this crude oil. Rajasthan has no refinery. Gujarat, thanks to Gujarat, that the Gujarat has offered a ready infrastructure of one of the world's best refineries. We have decided to lay a pipeline. The crude which we have discovered in Barmer has another challenge, that its pore level is 65. So if any temperature goes below 65, it is into a solid form. So the pipeline which we have to lay is all to be kept heated and insulated. Insulated, any pipeline is there, but the keeping a 700 kilometer long pipeline heated was a challenge. Technology was available, but implementing that technology on ground was another challenge. But I'm really thankful that the biggest portion of this pipeline, out of 700 kilometer, almost 550 kilometer, is in Gujarat. We have laid in well stipulated time of the project guidelines. There was hardly any hurdles on account of land acquisition and any other industry disturbances. While laying this pipeline, we have 3 large installations. One was at Bhogat, other one was at Viramgam, and a third was the Radanpur. Bhogat is Dwarika. It goes other way around, Viramgam, Radanpur and Bhogat. From last 15 years, we are continuously running this pipeline, which is a very sensitive, and I'm happy to share that we have not seen even a single day having our operations interrupted by any of the reasons. While bringing these large installations, which I say terminal, Viramgam, Radanpur and Bhogat, we have provisioned a captive power plant to provide the power as a backup this thing. And from last 15 years, these power plants are lying idle because the grid power is available seamlessly. The quality of the power is even also very good. The other way, this is not just one part of it. The crude which started producing in Barmer has bring the prosperity to Rajasthan, the state which was Barmer always known as a Pichhada Pradesh. I should not be quoting, but in 2008 or 9, the per capita income of Barmer used to be 20,000 rupees annually. While we made this investment, we bring this prosperity. Today, Barmer enjoys 1,26,000 rupees per capita income. And a large credit goes to Gujarat, having a ready infrastructure available for the refineries. If that would have not been available, our Rajasthan refinery will still take another year and a half to get that prosperity. So these reserves have waited for next 10 years here. The story is not just stopping here. The policies which our Honorable Prime Minister Modi ji is bringing in oil and gas sector are also landmarking. We have an open acreage licensing policy, and under that policy,
we have now new blocks in Rajasthan as well as in Gujarat as well, sir. The story which we have written in Rajasthan by bringing the Mangla, Bhagyam, Aishwarya crude reserves from Barmer to the surface, we are forward looking to bringing the same story in Gujarat as well. We are very sure that the Gujarat government and the support from the Honorable Prime Minister will be there to realize the dream of making India a oil sufficient. India consumes almost 50 lakh barrels of crude oil per day. And we as of now produce only 6 lakh barrels a day. If we make our country self-reliant on crude only, I'm sure you will see the dollar, which is running as 85, will come down to 45. So the crude and oil and gas has a potential to change the scenario of this country, taking the country not just the Dubai, but much beyond that. I'm very thankful to all of you for giving me an opportunity to speak here and looking forward for Vibrant Gujarat event in January. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Shashwat Kulshreshji, State Coordinator, KN Oil and Gas. The way he talked about the synergy between the two states and the way we are getting benefited with the kind of symbiotic relationship between Gujarat and Rajasthan. And Honorable Minister is here to very humbly urge everyone from the Rajasthan to come and be a part of Vibrant Gujarat. I now request Honorable Minister of Agriculture, Animal Husbandry, Cow Breeding, Fisheries, Rural Housing and Rural Development, Government of Gujarat, Shri Raghavji Patel, to please come and address the gathering. Zordar taaliyan ho jaye Honorable Minister Shri Raghavji Patel ke liye. Thank you. मंच पर उपस्थित श्री राजकुमार बेनीवाल जी, वाइस चेयरमैन और सीईओ गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, श्री पीबी पंड्या जी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, श्री एचएम जाडेजा जी, जॉइंट एमडी टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड, श्री रणधीर विक्रम सिंह जी, चेयरमैन फिक्की राजस्थान, यहाँ पधारे हुए राजस्थान के उद्योग जगत के सब मित्र, मीडिया प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, सबको मेरा नमस्कार। आज गुलाबी शहर जयपुर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और यहाँ पर उपस्थित रहकर इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, गुजरात और राजस्थान के मजबूत सांस्कृतिक संबंध दोनों राज्यों को एकजुट होकर प्रगति के राह पर आगे चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे कार्यों और मान्यता का मार्गदर्शन करते रहे। ऐतिहासिक काल से राजस्थान महाराजा जयसिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे भारत के कई बहादुर योद्धाओं की जन्मभूमि रही है एवं श्री अजय पीरामल, श्री राहुल बजाज, श्री लक्ष्मी मित्तल, श्री कुमार मंगलम बिरला जैसे दूरदर्शी उद्योगकार भी इस भूमि की उपज है। समय के संबंध में इन सभी के दृष्टिकोण से भले ही अलग अलग रहे हो, लेकिन लक्ष्य एक ही था, आगे बढ़ता भारत, विकासशील भारत। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 की कल्पना की है, जो भारत की आज़ादी के 100वें साल पर साकार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए सभी राज्यों को भी एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। मित्रों,
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2003 में गुजरात राज्य को एक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में प्रस्थापित करने और राज्य के सभी नागरिकों को समान विकास और व्यवसाय के अवसर प्रदान करने के लिए की गई थी। इस वैश्विक समिट की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में जो प्रगति और वृद्धि देखी जा रही है वह अकल्पनीय है। 2001 में गुजरात में आए हुए भूकंप ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, लेकिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। आपत्ति को अवसर में बदलकर प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की संकल्पना की और उसे साकार भी किया। यह पहली बार था जब किसी ने राज्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के समिट आयोजित करने की नई पहल की हो। सितंबर 2023 के महीने में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी और उद्योग जगत के वैश्विक नेताओं की उपस्थिति में अहमदाबाद में समिट ऑफ सक्सेस के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया। वाइब्रेंट गुजरात समावेशी विकास और सातत्यपूर्ण विकास के लिए बिजनेस नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पहलुओं को देखते हुए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों में से एक बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री के इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में हम 10, 11 और 12 जनवरी को महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में 10वें संस्करण का आयोजन कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का विषय गेटवे टू द फ्यूचर है, जो विकसित भारत एट 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाता है। समिट का उद्घाटन 10 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों और वरिष्ठ राजनयिकों, भारत सरकार के मंत्रियों, वैश्विक सीईओ, बहुपक्षीय संगठन के प्रतिनिधियों और विचारशील नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति में किया जाएगा। गुजरात के पिछले 2 दशकों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा निवेश स्थल रहा है। गुजरात को 2022 के बीच कुल 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी एफडीआई प्राप्त हुआ है। गुजरात एक नीति संचालित राज्य है और हमारी सरकार ने राज्य में एक अनुकूल व्यावसायिक इकोसिस्टम बनाने के लिए निवेशक अनुकूल पॉलिसी लागू की है। उदाहरण के लिए गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023, उद्योगों को सहायता के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजना 2022, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एवं लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2021, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021, टूरिज्म पॉलिसी और टेक्सटाइल पॉलिसी। गुजरात आज भारत में से होने वाले निर्यात में अग्रणी योगदान करता है। वर्ष 2022-23 में भारत के निर्यात में राज्य का योगदान 33% से अधिक था, जो देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक था। गुजरात को भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा प्राप्त है, जो 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है और भारत के 40% माल परिवहन को संभालती है। मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करने की चाहत रखने वाली राजस्थान की कंपनियां भारत की सबसे लंबी तटरेखा, उत्कृष्ट निर्यात, बुनियादी ढांचे
और निवेशक अनुकूल पॉलिसी का लाभ उठाकर गुजरात में अपनी कंपनी के विस्तार के अवसर तलाश सकती है। गुजरात एमएसएमई का भी केंद्र है। राज्य में 13 लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकृत है, जो 84 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। गुजरात उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार द्वारा मान्य प्राप्त 7,300 से अधिक स्टार्टअप का केंद्र है। गुजरात में स्टार्टअप समर्थित 210 से अधिक इनक्यूबेटर एवं शैक्षणिक संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क है। जैसा कि हम जानते हैं, एमएसएमई राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुजरात में आपके व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है। सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार और क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, सिरामिक्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, लैब ग्रोन डायमंड्स सहित जेम्स और ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एवं सेमीकंडक्टर, फिनटेक, स्टार्टअप और इनोवेशन। गुजरात में गिफ्ट सिटी, धोलेरा और मांडल, बेचराजी जैसे विशेष निवेश क्षेत्र, पेट्रोलियम, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र, डायमंड रिचर्स और मर्केंटाइल सिटी या ड्रीम सिटी, आणंद में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लॉजिस्टिक पार्क जैसे निर्माणाधीन और पूर्ण स्थापित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी अर्थात गिफ्ट सिटी भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर के बीच साबरमती नदी के तट पर स्थित एक नियोजित व्यावसायिक जिला है। बार्कलेज बैंक, डोइचे बैंक और मित्सुबी यूएफजी बैंक जैसे कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने अपनी आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां यहां पर स्थापित की है। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। सिंगापुर की एसजीएक्स निफ्टी ट्रेडिंग को गिफ्ट सिटी में स्थानांतरित कर दिया गया है। टेक दिग्गज गूगल ने हाल ही में गिफ्ट सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सऊदी अरब भी अपने निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने सॉवरेन वेल्थ फंड का एक कार्यालय यहां पर स्थापित करने पर विचार कर रहा है। फिनटेक और प्रौद्योगिक आधारित कंपनियों के लिए यहां पर अपार संभावना है। दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत सूरत में डायमंड रिचर्स एंड मर्केंटाइल सिटी या ड्रीम सिटी में 7 मिलियन वर्ग फुट से अधिक विस्तारों में फैली हुई ऑफिस स्पेस है। इस क्षेत्र में राजस्थान की ताकत देखते हुए हम व्यवसायों को ड्रीम सिटी में अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र 920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो गुजरात की एक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड औद्योगिक निवेश क्षेत्र और पहला ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी है। इलेक्ट्रॉनिक उभरती प्रौद्योगिकियां, ऑटो और ऑटो सहायक, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, धातु और धातुकर्म उत्पाद आदि धोलेरा शहर के लिए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए धोलेरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है और अहमदाबाद धोलेरा के बीच एक एक्सप्रेस विकसित किया जा रहा है। हम कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा
हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी स्थापित कर रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 22.5 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की 15% है। इतना ही नहीं, हमने नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के तहत 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करने का लक्ष्य भी रखा है। राजस्थान में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनके लिए गुजरात ने एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है। गुजरात निवेशकों को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ आकर्षक प्रोत्साहन पॉलिसी भी प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में धातु और खनिज, सिरामिक्स, कपड़ा और परिधान, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। पिछले 2 वर्षों में गुजरात के पर्यटन उद्योग ने उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। वाइब्रेंट गुजरात परंपरा एक आधुनिकता का एक मनोहर मिश्रण है। लोथल और धोलावीरा में प्राचीन संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, सदियों पुरानी मूर्तियाँ, हस्तशिल्प, कला और त्योहार जैसे रण उत्सव, पतंग उत्सव, वाइब्रेंट नवरात्रि आदि और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त विरासत स्थल ऐसे उपहार है जो राज्य की अलग पहचान बनाते हैं। अहमदाबाद के ऐतिहासिक किले के अंदर बसा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में उभरा है। इससे अतिरिक्त यूनेस्को धरोहर स्थल धोलावीरा जैसे प्रतिष्ठित स्थलों को पर्यटक सक्रिय रूप से प्राथमिकता दे रहे हैं। शिवराजपुर समुद्र तट एक ब्लू फ्लैग प्रमाणित पर्यटन स्थल है। गुजरात सिनेमाई पर्यटन और गुजरात विरासत नीति राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा उठाए गए शासन समर्थक कदमों के उदाहरण है। राजस्थान और गुजरात साझा सीमा रखने वाले एक पड़ोसी राज्य होने के नाते एक दूसरे का सहयोग करने, सीखने और बढ़ने के अवसर तलाश सकते हैं। मेरा मानना है कि गुजरात में औद्योगिक बुनियादी ढांचा, अनुकूल पॉलिसी और उद्योग अनुकूल दृष्टिकोण आपके लिए, राज्य के लिए और देश के लिए फायदेमंद होगा। मैं इस अवसर पर आपको गुजरात में निवेश करने और भारत की विकास कहानी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे आशा है कि देश में अमृत काल में आयोजित हो रहा वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10वां संस्करण हमारे लिए सुनहरे भविष्य का अमृत बनेगा। मैं पुनः एक बार नेटवर्किंग और नॉलेज शेयरिंग के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आप सभी को आगामी 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पधारने के लिए आमंत्रित करता हूं। रेड टेप पर रेड कारपेट की विचारधारा के साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम गुजरात में व्यापार और उद्योग के लिए राज्य सरकार के हर संभव समर्थन के साथ है। गुजरात में आपकी निवेश यात्रा को सुचारू और कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में हम मिलकर टिकाऊ और समावेशी विकास का एक इकोसिस्टम बनाने में सफल रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री ने गुजरात में विकास की मजबूत परंपरा शुरू की है, उसको हमारे मक्कम और मुदु मुख्यमंत्री जनप्रिय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने खास आप सबको वाइब्रेंट गुजरात में पधारने के लिए आमंत्रण देने के लिए मुझे भेजा है। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत का निर्माण करें, गुजरात में निवेश करके इस संकल्पों को पूर्ण करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।
माननीय मंत्री महोदय, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, काउ ब्रीडिंग, फिशरीज, रूरल हाउसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, श्री राघव जी पटेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से सभी को यहाँ पे अर्ज किया है फॉर वाइब्रेंट गुजरात, भारत के विकास यात्रा में साथ देने के लिए वाइब्रेंट गुजरात में ज़रूर आप सभी का इंतज़ार रहेगा। बहुत सारे सवाल यहाँ मौजूद सभी जो बिज़नेस हाउसेस हैं, बिजनेसमैन हैं जो यहाँ आए हैं और इन्वेस्ट करने का, वाइब्रेंट गुजरात का पार्ट होना सोच रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे सवालों का जवाब तो माननीय मंत्री महोदय जी और श्री राजकुमार बेनीवाल जी IAS उनके सब स्पीच में आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन रियली पुट द क्वेश्चन हियर। 2-3 क्वेश्चंस हम ज़रूर लेना चाहेंगे। कुछ ऐसा प्रश्न आपके मन में जो आप करना चाहते हैं? या प्लीज़ मैम, मे आई नो योर नेम मैम? Hello, my name is Alka Batra. I am state president from Association of Business Women, Commerce and Industries, and I am founder of Association of Women Entrepreneurs. Compliments to Mr. Rajkumar Beniwal for the very, very impressive, layout and plan for, Invest Gujarat for this thing. Of course, Gujarat is fortunate that हम राजस्थानियों से आपके पास 2 चीज़ ज़्यादा है, एक पोर्ट और दूसरे मिस्टर नरेंद्र मोदी। So, jokes apart, in your plan, everything is, I think, on place. Everything is very, very impressive, except for one thing, which is anything special for women entrepreneurs. Any zone, anything like MSME, they contribute in MSME and SME, which is the backbone of economy of any state. और स्पेशली एक्सपोर्ट्स में बहुत सारी महिलाएं हैं, उद्यमी हैं जो कि एक्सपोर्ट्स में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहती हैं और आपके पास गुजरात में पोर्ट होने की वजह से कुछ सुविधा ज़्यादा हो सकती है। उनके लिए कुछ आप लोगों ने स्पेशल इन्वेस्ट गुजरात में या वाइब्रेंट 2024 में कुछ प्लान किया है? जिस तरह की तेलंगाना में आप देखिए तो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जोन है जहाँ पे सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स अपने उद्यम लगा सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं और उनको स्पेशल ग्रांट्स मिलती है, सिंगल विंडो से क्लियरेंस मिलती है, बहुत इजी अप्रोच हो जाती है। तो ऐसा कुछ आपकी इस प्लान में है क्या? दिस इज़ माय क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you so much. Let me first answer, then we'll come to this side. First, Sound is not proper. Can you please check? Sir. So, आपका पहला जो सवाल था, पहला कंस्ट्रेंट था, उसके लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2 कंस्ट्रेंट राजस्थान के हैं वो दोनों ही हट गए हैं अभी। मोदी जी अभी सबके हैं, सिर्फ गुजरात के नहीं हैं। और दूसरा कि आप, हमारे पोर्ट आपके ही हैं, आप कैसे भी उनको उपयोग कर सकते हैं। जैसा अभी बताया उन्होंने, कार्न एनर्जी वालों ने, कि उन्होंने यहाँ पे अपना प्लांट लगाया और गुजरात का रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे यूज्ड इट, उसके कारण उनका बिजनेस बढ़ा। सो हम लोग हमारे जो भी पोर्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट भी इसी हिसाब से कर रहे हैं कि इंटायर नदर्न इंटरलैंड ऑफ द कंट्री उसको बेनिफिट ले सके। वी हैव आवर फ्यूचर प्लान्स फॉर आवर पोर्ट्स ऑल्सो दैट विल सपोर्ट राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, every entire Punjab, everything. The connectivity is also being developed on the same lines. Your second question is very important, and we are very focused and concerned, and we have our own policies for that. Let me tell you, in Gujarat there is one place, Sanand, near Ahmedabad, जहाँ पे हमने सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है। उसमें केवल विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ही हम लैंड अलॉट करते हैं, उनके ही स्टार्टअप्स को जो है प्रमोट किया जाता है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमारी कुछ पॉलिसीज़ भी हैं जिससे उनको स्पेशल इंसेंटिव्स भी देते हैं। इनफैक्ट इन आवर बजट वी हैव अ स्पेशल कंपोनेंट for women in all the departments. So there is a prescribed format in which every department has to keep certain percentage of their budget only for activities related
to women or by the women entrepreneurs. और अब तो और आपको खुश होना चाहिए कि इवन पार्लियामेंट में और संसद में सब जगह आपको you have got the reservation. You should thank honorable our prime minister for that. You have lot of opportunities. Yes. माननीय मंत्री महोदय बेनीवाल साहब, पधारे हुए गुजरात सरकार के सभी डेलीगेशन का राजस्थान में स्वागत। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं भी 2009 से वाइब्रेंट गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ और 2015 में मैंने वहाँ भी बूथ किया था। क्या अभी इस विजिट में आप यहाँ बूथ रिजर्वेशन या कोई स्टॉल का रिजर्वेशन का हो तो वी लव टू बुक आवर स्टॉल फॉर आवर अपकमिंग इवेंट। और गुजरात का जितना कहें उतना कम है, क्योंकि ये तो तभी हो सकता है जब मोदी हो तो मुमकिन है। अभी हमने उस पर एक रिसेंट बुक भी निकाला है, माननीय मंत्री महोदय को भी भेंट किया है। माननीय मोदी साहब ने जो 132 देशों की यात्रा की है उस पर हमने जो बुक निकाला है आपके लिए भी भेंट है। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। आप अपना जो स्टॉल है स्पेस बुक कर सकते हैं। अभी आई थिंक ऑनलाइन सिस्टम से भी आप बुक कर सकते हैं। फिर भी इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ लेट अस नो। जितना भी स्पेस चाहिए वी हैव सफिशिएंट स्पेस। हमारा जो मेन कन्वेंशन हॉल है जो आपने मूवी में देखा था उसके पास में ही बहुत बड़ा एग्जीबिशन का स्पेस है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। यस प्लीज़। सम्माननीय मंच एवं उपस्थित सभी व्यावसायिक और उद्यमी, आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ जो विजन दिख रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं सम्माननीय मंच तक अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बिजनेस इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश होने के लिए मुख्य तौर पर 4L का कॉन्सेप्ट लागू होता है। एक लैंड, दूसरी लेबर, तीसरी लिक्विडिटी और चौथा लॉ। बाकी की चीज़ें लगभग मैनेज्ड हैं, जगह अपनी जगह पे है, पैसा अपनी जगह पे है, लेबर अपनी जगह पे जहाँ काम हो रहे होते हैं। लेकिन लॉ के जिस फैक्टर में हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में मुख्यतः तीन प्रकार के लॉ लागू होते हैं। एक सेंट्रल एक्ट, दूसरा स्टेट लॉ और तीसरा लोकल लॉज, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ व्यावसायिक लोगों का रोल भी उसमें पूर्ण रूप में एक सिंगल विंडो के तौर पर कहीं नहीं देखा गया है, जिसकी बड़ी मेजर समस्या उद्यमियों के सामने आ रही होती है। दूसरा, लॉज में कभी एक लॉ दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ उलझा हुआ होता है, तो जो कागजी कार्रवाई का जो पार्ट है उसके लिए कोई ऐसी एजेंसीज, नोडल एजेंसीज या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्लेटफार्म जो सिंगल विंडो के साथ साथ एक्चुअली नीति और नीयत के साथ जो इसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? मैं एडवोकेट शिव कुमार अवार बाई प्रोफेशनल कॉरपोरेट लीगल, टैक्सेशन और IPR में पिछले 18-20 साल से डील कर रहे हैं, तो ये एक मेजर समस्या हमें हिंदुस्तान में देखने को मिली है। थैंक्स। Thank you for this question. This is very important question from the point of view of industrialists that rules regulations जो हम लोग बनाते हैं, लैंड की भी आपने बात की, रूल्स रेगुलेशंस जो भी हम बनाते हैं वो मोस्टली स्टेट्स में आपने देखा होगा वो स्टैटिक रह जाते हैं और उसके कारण ही सब सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। आज से 5 साल 10 साल पहले जो रूल्स रेगुलेशन का रिलेवेंस था वो हो सकता है आज नहीं हो। आज जो रूल्स रेगुलेशन है उसका 5 साल बाद कोई रिलेवेंस नहीं होगा। वी नीड टू चेंज आवर रूल्स रेगुलेशन एंड एज आई मेंशन इन माय प्रेजेंटेशन दैट इन गुजरात एवरी 2-3 years वी डिस्कस कि कौन से रूल्स रेगुलेशन का क्या रिलेवेंस अभी है कि नहीं है, एंड वी कीप चेंजिंग आवर पॉलिसीज रेगुलरली। यू सॉ दैट ऑल आवर पॉलिसी, ऑलमोस्ट 20-25 पॉलिसीज वर देयर, ऑल आवर पॉलिसीज आर 22-23 लेटेस्ट है, सबको हमने रिवाइज किया है। जो भी प्रॉब्लम आता है उसमें वी टेक फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मेजर इश्यूज आ रहे हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, वो सारा जो चीज़ है, प्रोसेस है, उसमें वाइब्रेंट गुजरात भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा हमारे जब पुराने ज़माने में जो कल्चर है हमारा कि त्यौहार क्यों बनाए गए थे, जब भी जैसे दिवाली आता है तो सब लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, पूरा सिटी क्लीन हो जाता है, घर क्लीन हो जाता है, सब उसको सेलिब्रेट करते हैं। सेम थिंग इज़ विद अस। हर 2 साल में वाइब्रेंट गुजरात आता है तो कंपल्सरीली वी हैव टू रिवाइज ऑल आवर पॉलिसीज, वी हैव टू सी रूल्स रेगुलेशन क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वी हैव टू कंसल्ट आवर स्टेक होल्डर, वी हैव टू कंसल्ट इंडस्ट्री पीपल कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो इट हैज़ बिकम ए रिचुअल फॉर अस। Every 2 years we have to carry out this exercise,
and this has really helped us a lot. So you'll not find that kind of problem in Gujarat. फिर भी अगर है तो आप बताइएगा, we are there to help in changing the rules regulations. Any other question? From this side? So I hope if there are no questions, I once again thank all of you. I thank FICCI, particularly Rajasthan branch, which have really helped us in organizing this event. And I would love to see all of you during Vibrant Gujarat Summit. Consider it as your own summit and be part of that. कुछ कल हम लोग एक दिन पहले आए थे, तो कल हम लोग सिटी पैलेस देखने गए थे. बहुत ही सुंदर, मैंने तो कई बार देखा है, बट फिर भी अलग तरह से देखा इस बार. आपके जो राजस्थान के जो राजा महाराजा, दे वर हाईली इनर्जेटिक. एक जो महाराजा थे आपके जैसे सवाई सिंह या क्या, ही वाज 250 kg एंड बिग एंड ऑल दैट, सो बट यहाँ मैं देख रहा हूँ कि समहाउ जो तालियां हैं वो उस लेवल की नहीं हो रही हैं. तो आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस, लेट अस क्लैप टुगेदर फॉर द सक्सेस एंड फॉर विकसित गुजरात. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir, for putting in so much of energy in the hall. मैं गुजारिश करना चाहूँगी श्री N.K. जैन सर से, फिक्की राजस्थान MSME कमेटी से. आप प्रेसिडेंट एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन राजस्थान भी हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड फॉर वोट ऑफ थैंक्स. ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री N.K. जैन सर का. सर्वप्रथम तो मैं हमारे बीच मौजूद मंत्री जी राघव जी पटेल का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज आपने जो वाइब्रेंट गुजरात के रूप में एक जो छवि प्रस्तुत की है, मैं समझता हूं इस छवि को लेके हर स्टेट को सीखना चाहिए कि किस तरह से आप अपने स्टेट को प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं. आपने जैसा बताया कि 2000 में जो भूकंप आया था, उसके बाद कैसे गुजरात रिवाइव हुआ है, उसके लिए मेरे पास बहुत बेहतरीन 4 लाइनें हैं. वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो. तो आपके जो नाविक गुजरात के थे, अब वो पूरे हिंदुस्तान के नाविक हैं और उनकी कुशलता को अब तो पूरा विश्व मान रहा है. तो ये जो चीज़ हम आपके नेतृत्व में देखी है, पहले गुजरात के नेतृत्व में देखी और अब पूरे हिंदुस्तान के नेतृत्व में देख रहे हैं. इस नेतृत्व का कमाल है कि आज वाइब्रेंट गुजरात का 20वां साल है और 20 साल में अब ये वाइब्रेंट गुजरात जवान हो चुका है. हमने इसका शैशव काल भी देखा है, जब शुरू हुआ था तब भी हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था. राजकुमार बेनीवाल जी IAS हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया और सरकार की नीतियों के बारे में बताया और जिस तरह हमारे ऑडियंस के बीच में से कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस थे, उनका भी जवाब देके उसको क्लियर किया. एक चीज़ मैं और आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि हर इंडस्ट्री का एक कंसर्न होता है रेट ऑफ पावर, टैरिफ ऑफ पावर, और हम राजस्थानी काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह हर वन नेशन वन रूल्स रेगुलेशन, एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक झंडा, क्यों ना एक राष्ट्र एक पावर टैरिफ को आगे बढ़ाया जाए, जिससे सारे स्टेट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर मिले. और जिस तरह से आज किसी स्टेट में पावर की रेट 3 रुपये होती है, किसी स्टेट में 12 रुपये होती है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें बराबर मिल नहीं पाता उद्यमियों को. इस चीज़ को यदि आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ आज मंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं और आप सभी जो गुजरात से पधारे हैं मोदी जी के बहुत नज़दीक होंगे, और अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे वन नेशन वन पावर टैरिफ, तो ये हम सभी उद्यमियों के लिए, पूरे भारत के उद्यमियों के लिए बहुत लाभदायक होगा. हमारे बीच पांड्या जी हैं, आप भी IAS हैं और नीति नियंता हैं वहाँ के गुजरात के. निश्चित रूप से आप सब ने जो नीतियाँ बनाई हैं, उस नीति को देख के हमें खुशी होती है और हम समझते हैं कि जब एक इंजन इतना पावरफुल था और अब तो हिंदुस्तान में डबल इंजन की सरकार है. और मैं समझता हूँ आज मंगलवार है और आज के दिन राजस्थान में भी इसी तरह का एक इंजन डिक्लेयर होगा
और निश्चित रूप से राजस्थान भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा जिस स्पीड से गुजरात आगे बढ़ा है। तो हम ये सब आज कामना करते हैं कि, और गुजरात के लिए तो हम सब ये कहते हैं, गुजरात तो हमारा बाजू में छे। माउंट आबू में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर खाना गुजराती, रहना गुजराती, और माउंट आबू राजस्थान का हिल स्टेशन है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उस जगह आपके जो टूरिस्ट हैं गुजरात के, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज गुजरात के टूरिस्ट की रहती है राजस्थान में। इसी वजह से गुजरात और राजस्थान का जो एक दिल से मिलन है वो पुराना है, आज का नया नहीं है। और हम चाहते हैं आज आपने जो ये वाइब्रेंट गुजरात के नाम से जो समिट आज यहाँ किया है, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम राजस्थानियों की तरफ से आपको मिलेगा, और निश्चित रूप से ज़्यादा उद्यमी वहाँ आना चाहेंगे। राजस्थान के बारे में जो आपने सेमीकंडक्टर की बात कही, तो मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान में क्वार्ट्ज मिनरल जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं, उसकी बेस्ट क्वालिटी भीलवाड़ा और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तो और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो हम चाहेंगे वाइब्रेंट गुजरात में यदि आप उसका एक प्रेजेंटेशन करें तो निश्चित रूप से न सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार, हमारे देश की सरकार सेमीकंडक्टर्स के टेक्नोलॉजी को लाना चाहती है, और पीछे अनिल अग्रवाल जी ने उसको किसी कंपनी के साथ में घोषित भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका वो जो MOU था वो फेल हो गया। हम आपको इसमें सपोर्ट दे सकते हैं, राजस्थान में रॉ मटेरियल भी है और टेक्नोलॉजी भी है, तो इसको गुजरात और राजस्थान मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर आप थोड़ा विचार करें, और जो भी सपोर्ट चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में रणधीर विक्रम सिंह जी जो हमारे चेयरमैन है फिक्की के, वो मौजूद हैं, और आपने आज इतना सुंदर आयोजन किया, इतना ज्ञानवर्धक आयोजन किया, इसके लिए मैं फिक्की गुजरात की टीम से भी यहाँ पधारे हुए हैं उनका भी, और हमारे राजस्थान के फिक्की टीम का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छे से अच्छे आयोजन को बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित करते हैं, और लोगों के ज्ञानवर्धन में, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में, इंडस्ट्री की नॉलेज और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में आप अपना बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। तो फिक्की को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में HM जडेजा जी हैं, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे एस्टीम्ड गेस्ट हमारे बीच में आज पधारे हुए हैं यहाँ पे, मारवाड़ी फेडरेशन के और 40 के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अरुण अग्रवाल जी मौजूद हैं। हमारे बीच जैमिनी जी मौजूद हैं जो कि स्टील में बहुत बड़ा नाम है, और बहुत सारे उद्यमी हमारे बीच, मनीष गुप्ता जी हैं कि सोलर में इनका बहुत अच्छा नाम है, INA सोलर के नाम से। इसी तरह से हमारे बीच में महिला उद्यमी अलका बत्रा जी भी हैं, और IT सेक्टर से वंशिका जांगिड़ भी हैं। तो हमारे राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के अशोक पाटनी जी भी हैं, और अतुल शर्मा जी हमारे जो डायरेक्टर फिक्की हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच आप लोग पधारे और इस आयोजन को सफल बनाया। मंच का और सामने जो सम्मानित गेस्ट बैठे हैं सभी का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Shri N.K. Jain sir, President EAR and FICCI राजस्थान MSME कमेटी के आप पार्ट हैं। इस जोशीले से धन्यवाद जो आपने ज्ञापित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पुनः मैं आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू यहाँ बैठे हमारे सभी डिग्निटरीज़ के लिए, जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ सवाई जय सिंह जी का जो ये हमारा राजस्थान है, वैसी दमदार तालियों से ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, काउ ब्रीडिंग, फिशरीज, रूरल हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, श्री राघव जी पटेल का आप तालियों के साथ पुनः धन्यवाद करें। श्री राजकुमार बेनीवाल जी, IAS वाइस चेयरमैन एंड CEO गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। श्री PB पांड्या जी, IAS डायरेक्टर हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। श्री HM जडेजा जी, जॉइंट MD टूरिज्म कॉरपोरेशन